Good morning, students. Now we are doing chapter number 4, that is Literary Heritage of India. And before this lecture, we completed about the medieval literature, which was a literature of between period of 1000 to 1500 AD. Okay, and most of the things यहाँ पे हम मुगल्स के बारे में पढ़ने में आती है. Now we are going to study over here about the ancient universities of India, and this is the last part of your chapter. Various ancient universities which were there in India. Okay. Yes. So we are going to study over here about the 4 universities, that is Nalanda, Takshashila, Varanasi and Vallabhi. Okay. Just a minute. Yes, now. So, Nalanda University, ancient Nalanda University was situated at Badgaon village of Patna district in Bihar. The Nalanda gave more importance in Buddhist and Jain tradition. Actually, Nalanda was a Buddhist university, okay, situated in Bihar, present Bihar district. गुप्ता डायनेस्टी को ये यूनिवर्सिटी बिलोंग कर मतलब उनके टाइम पे ये यूनिवर्सिटी बनी थी. This ancient university also became pilgrimage of Jains as Mahavir Swami had performed 14th Chaturmas year. In the 5th century, Kumar Gupta had built a monastery here. Since then, fame of Nalanda had increased. There were thousands of priceless treasures of manuscript. This was a pious place of Hindu culture. Students from various parts of the world used to come here for study. The great traveler Hun Sen also came here. Today, only the ruins of the great university, but the midst of the ruin, one can visualize the glory of the culture. Yes, now, see, I just read the whole paragraph, but there is much history about this university. Actually, this university, as I said, was built in the period of Gupta dynasty. मतलब ये 3rd 4th century की university है, BC. Okay. Now, this university was attacked many times, thrice by Huns, by Gaudas, and by Bakhtiyar Khilji, मतलब Muslim invader. Okay, he was actually a person hired by some Turkish ruler, जिसने इसको हायर किया था इस यूनिवर्सिटी को रुइन करने के लिए. नाउ द हिस्ट्री से सो कि आज भी इसके रुइंस अवेलेबल है इस बुक के, इस यूनिवर्सिटी के. बट व्हेन अ फायर वॉज सेट ओवर हियर, मतलब बुक को जलाने के लिए आग लगाई गई थी. एंड इट टुक नियरली 6 months टू बर्न द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हियर. द बुद्धिस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, वो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस रिलीजन ने, क्योंकि उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज थी, और वो सब इट वॉज बर्नड बाय दिस पीपल. ओके, ऐसा मैंने पढ़ा है दैट 9 million मतलब कितनी बुक्स, 9 million मैन्युस्क्रिप्ट वेर अवेलेबल, जिसको जला दिया गया था. और आज भी वहाँ पे रूइंस में काफ़ी सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी है, और उसकी 90% भी हमने सर्च की नहीं, मतलब नॉलेज उसमें से अभी भी 90% भी मिला है नहीं. तो सोच के देखो, मतलब हाउ मच नॉलेजेबल पीपल वेर देयर ओवर हियर. थिंक अबाउट कि 9 million मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने लिखी कब होगी. दैट इज़ अ थिंग टू बी थॉट. फाइन. सो इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. नेक्स्ट कम्स, a student who passed from Nalanda was considered the ideal student of India. During 5th to 11th century, education was best at Nalanda, and in India at that time had best libraries of the world were available. See that only. मैंने जो आपको बोला, लाइब्रेरीज इसकी 3 लाइब्रेरीज थी, 9 स्टोरेज की लाइब्रेरी थी, मतलब एज इट हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है. एंड उसको जलाने के लिए बहुत टाइम लगा था. इतनी सारी बड़ी और बेस्ट लाइब्रेरी थी, पर इसकी नॉलेज कभी किसी को मिल ना सके, या इसका मतलब यू कैन से टू completely destroy this religion, the things were done like this. Many students of India and abroad used to come for study and research in the library of Takshashila as well as Nalanda University. Yun Sang took 657 books from here to China. You will think 657, but it is nothing when we see that there were 9 million or more than
these books available over here. So people from China, Japan, Korea, even अरब कंट्री से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. Hun Sen visited in the 7th century. There were 7 huge halls in the university. There were 300 rooms for delivering lectures. Special monasteries were built for dwelling of students, मतलब रहने के लिए. Many villages were donated for university sustenance. Food and clothing facilities were provided free of cost from the earning obtained from those villages. It took repository, मतलब library area as known as Dharmagunj. During 5th to 11th century, Nalanda was reputed as well as an esteemed center of education. See now, during 5th to 11th century, it was considered to be the best. And see, I told you that the books were, मतलब इनको किसने अटैक किया था? एक तो हुन्स ने किया था, चाइनीज पीपल ने. Then Gaudas, these were the South. Gaudas are actually the South Indian dynasty को belong करते हैं. And Khiljis, मतलब this will come to Turkish people. So these all came to India after 6th to 7th century. और 11th सेंचुरी तक तो ये थी, मतलब उसके बिटवीन दिस पीरियड उसको रूइन करने की कोशिश की गई थी. ओके, सो दिस वाज अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी. टुडे आल्सो द रूइंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर प्रेजेंट इन बिहार स्टेट. नाउ कम्स तक्षशिला. नाम भी बहुत अच्छा है, तक्षशिला. सी नाउ, ancient University of Takshashila was located at Rawalpindi of present Pakistan. You know who is known as Rawalpindi Express? Rawalpindi Express मतलब Shoaib Akhtar. He comes from this city. So presently, the ruins of this university is where at Rawalpindi, and which is in Pakistan. It was the capital city of the ancient Gandhar region. Now Gandhar region, see, अगर आप history जानते हो थोड़ी बहुत, तो गांधार, वेर यू वुड हैव लिसन और लर्न दिस नेम. गांधारी सबको पता होगी. क्वीन गांधारी. हु वाज शी? शी वाज मदर ऑफ कौरवास, और वो गांधार रीजन को बिलोंग करती थी. गांधार रीजन मतलब आज का जो हम कंधार कहते हैं वो, एंड कंधार मतलब प्रेजेंट विच इज़ इन अफगानिस्तान. सो इंडिया वॉज एक्चुअली, भारतवर्ष वहाँ तक फैला हुआ था, राइट फ्रॉम कम्बोडिया, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदू रिलीजन था, टू अप टू अफगानिस्तान और यू कैन से हाफ ऑफ द ईरान, वहाँ तक भारतवर्ष फैला हुआ था. ओके, सो द कैपिटल सिटी ऑफ दिस रीजन वॉज गांधार रीजन. दैट्स वाई अब हम कहाँ पे देखते हैं इसको? पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी के रूम्स है. दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट. Most of the students stayed in the ashram to practice with Guru. Jivak, the disciple of Lord Buddha, learned the lesson of Ayurveda here. According to belief, this university was named after the name of Taksha, the son of Bharat, brother of Lord Ram, born in Raghukul. Yes, मतलब रघुवंश में किंग राम इज ब्रदर भरत एंड हिज सन वॉज तक्षक. ओके, जिसको देन आप the history shows that when Ram Bhagwan took salvation, then he distributed all the areas to his son and his brother's sons, various area. So this area was given to brother's son Takshak. It was renowned education center of 7th century. Students were free to study the subject of their interest in spite of limit allotted to 20 students per teacher. They used to teach even more. Students from distinct cities like Varanasi, Rajguru, Mithila, Ujjain crowded the university. Yes, the facts about Takshashila University ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे. एंड इट वॉज नॉट अ कोर्स गिवन, जैसे बोलते हैं ना वी डू BSc, BA और वी go in medical. It was not so. Any student was free to study anything whenever he likes. मतलब if he want to study this, he can go and attend that lecture. If he wants to study something else, he can go over there and sit over there. So it was not प्रिस्क्राइब किया हुआ सिलेबस था नहीं, एंड किसी के पास वो फीस नहीं लेते थे. Every student used to study over here free of cost. But this university was completely ruined in 5th century by Huna tribe completely destroyed Takshashila. Yes, in 5th century Huna tribe, मतलब Huns they completely destroyed Takshashila.
And the ruins of this university was founded in 19th century by Alexander Cunningham. 19th century में इसके ruins found out किए गए थे. And there are many renowned persons. We'll study first. We'll see this over here. Prince of Varanasi and Prasenajit, the king of Kaushal, study here. Also the great grammarian Panini, जिसका बारे में हमने आगे पढ़ा है, grammarian. An expert politician, Kautilya got education from this university. Kautilya means Chanakya. Chanakya and Kautilya both are same people only. Okay, and ओरिजिनल नेम ऑफ चाणक्य, या यू कैन से चाणक्य कौटिल्य थे, और कौटिल्य का ओरिजिनल नेम था विष्णुगुप्त. तक्षशिला was the best center for higher education. Normally students used to stay with gurus to practice education of Vedas, military services, Gaj Vidya, archery, grammar, philosophy, war lore, astronomy, astrology was given here. Chanakya, the mentor of Chandragupta Maurya, also studied here. Chinese scholar Fa Heng visited this university in the beginning of 5th century and later it got ruined. See now, ये यहाँ पे आए थे, then ये ruin हुआ है, and it was ruined by Huns. Now, here the word Chanakya comes. Okay. Now Chanakya, who was Chanakya? He was mentor of Chandragupta Maurya. और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के राजा थे. Now चंद्रगुप्त मतलब एक सीरियल भी आती है जिसके जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ चाणक्य दिखाई गई है. विष्णुगुप्त. ओके, चाणक्य जो एक जब वो छोटे थे विष्णुगुप्त नाम के से जाने जाते थे. हिज फादर वॉज ऑल्सो अ टीचर, यू कैन से स्कॉलर, एंड हिज फादर वॉज किल्ड बाय द किंग धनानंद एट दैट टाइम, एंड देन हिज मदर ऑल्सो डाइड. और ये अकेला बच्चा रहा था और उसके गांव में सब ने इसका साथ छोड़ दिया था, मतलब ऐसे बोल के कि यू आर द सन ऑफ अ ट्रेटर, तुम एक ट्रेटर का मतलब होता है धोखेबाज के बेटे हो. सो लेटर वो चल के एक कारवा जा रहा था, उनके साथ वो बैठ गए विष्णुगुप्त, एंड ही रिच. उस कारवा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, वो तक्षशिला गांव में जा रहा था. सो ही सेट ओवर देयर, और वो वहाँ पे गए, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज़ हुआ करती थी. एंड लेटर ही स्टडीड ओवर देयर. वहाँ पर भी उन्होंने अपना सही नाम बताया नहीं था, बिकॉज उनको कोई एडमिशन नहीं देता अगर वो बोलते कि ही वॉज अ सन ऑफ अ ट्रेटर. सो एज द स्टडी ओवर देयर वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, ही स्टडीड ओवर देयर एंड लेटर ही बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमिस्ट. ओके, सो नेक्स्ट कम्स वाराणसी. ना वाराणसी मतलब you all know where is Varanasi. It is a city of UP state. Okay, काफ़ी सारे लोग वाराणसी जाते भी हैं. It is one of the biggest pilgrimage of Hindu religion. So Varanasi was one of the place of pilgrimage during 7th century. It was the famous education center. It grew as a religious center of the Aryan culture in Upanishad period. King of Varanasi, Ajatashatru, was a great philosopher of Upanishadic age and great supporter of education. This is mentioned in Vyas Samhita that Maharshi Ved Vyas had his ashram in Varanasi. Okay, Maharshi Ved Vyas, ऐसे व्यास संहिता में कहा गया है कि महर्षि वेद व्यास जिसने महाभारत, ये वेद व्यास ने बोली है ना महाभारत, वो उनका आश्रम कहाँ पे था? वाराणसी में था. आज भी काशी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट इट इज़ अ फुल मॉडर्न फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी. काशी विश्वविद्यालय आज भी है, बट हम जो पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग ऑफ द 7th century, नॉट दैट यूनिवर्सिटी. Lord Buddha chose Varanasi as a suitable place for the propagation of his preaching. Potent philosopher Adi Shankaracharya had to move to Kashi to adopt a new principle of Vedantas. Vallabhacharya and Chaitanya Mahaprabhu, the pioneer of Pushti Marg, attained prestige for their Vaishnava sect in Kashi. Majority of the scholar families of Punjab had to migrate to Kashi, while new families migrated to Kashmir. Many other princes came for education in Varanasi. Monastery at Sarnath became famous education center under the patronage of Emperor Ashoka. So वाराणसी हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ाता था, आज भी वो अवेलेबल है. एंड यू नो वाराणसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी बट प्लेस वाराणसी. इट इज़ biggest city in the world having 84 ghats. Okay, present oldest city in the world जहाँ पे लोग आज भी रहते हैं.
बहुत ओल्ड सिटी है वाराणसी, दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी कही जाती है, और जहाँ पे 84 घाट्स है। एंड वेरी फेमस पर्सन फ्रॉम वाराणसी, देर आर पंडित दैट सितार वादक, ही वॉज फ्रॉम वाराणसी। दैन बिस्मिल्ला खान, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम वाराणसी। बहुत फेमस पीपल यहाँ से आए हुए हैं। सो यार इतना ही वाराणसी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है, बट आज भी वो यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे हिंदू कल्चर के बारे में बहुत डीप में पढ़ाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट वाराणसी। एंड देन कम्स वल्लभी। वल्लभी मतलब हमारा वल्लभीपुर, अपने यहाँ जे 1.5 आवर पे जो सिटी आती है वल्लभी। ओके, this University of Gujarat was very famous center of education in 7th century. There was a significant contribution of contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a renowned and a huge center of education. Vidyadham, Vallabhi was the center of Hinayana cult of Buddhist religion. See, Mahayana and Hinayana, I told you in some of the lecture that there are two cult of Buddhist religion, एक होता है Hinayana और एक होता है महायाना। वो हिनयाना पीपल मतलब श्रीलंका और कंबोडिया के जो लोग हैं वो सब हिनयाना है। In the middle of the 7th century, Buddhist scholars like Srimati and Gunmati were the leading principals of Vallabhi. बहुत स्कॉलर्स के बारे में यहाँ पे नाम दिए भी नहीं गए और हिस्ट्री भी बताती नहीं है, बट दीज वर द टू फेमस। एंड द स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंस एरिया ऑफ गंगा यमुना यूज टू कम हियर फॉर स्टडीज। Chinese traveler It Singh noted that Vallabhi completed with the famous education center of Nalanda, which was located at the eastern part of India. Now see, Nalanda was a very famous university, ठीक है, बड़ी थी एंड फेमस थी, बट वल्लभी वॉज इक्वल कॉम्पिटिटर ऑफ नालंदा। जो कथा सरिता सागर बुक है फ्रॉम कश्मीर, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा उसमें आई टोल्ड यू इट इज़ अ बुक ऑफ टेल्स, फेरी टेल्स के बारे में बुक्स है। उसमें भी एक स्टोरी लिखी गई है कि वहाँ पे एक ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण है, वो ऐसा कहता है कि मैं अपने बेटे को वाराणसी या नालंदा यूनिवर्सिटी में भेजने से बेहतर समझता हूँ कि मैं उसको वल्लभी पढ़ने में भेजूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ग्रेट एंड गुड यूनिवर्सिटी। सो इट वॉज अ ग्रेट कॉम्पिटिटर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। Vallabhi was a capital and international port from 480 to 775 AD. The ruler of Vallabhi belonged to Maitreya dynasty and patronized education and university as well. मतलब they used to give बहुत सारा इम्पोर्टेंस देते थे एजुकेशन को। It is notable that royal people of Maitreya dynasty were not Buddhists, however they were helping the institution. Yes, वो लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, मैत्रेय डायनेस्टी के लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, बट फिर भी वो लोग एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। सो वाराणसी एंड नालंदा बोथ द यूनिवर्सिटी जो बुद्धिस्ट रिलीजन पे वो बिलोंग करती है। इन 775 अरब अटैक Mithras were defeated and the university was closed down. The name of famous scholar was written on the gate. Scholars by showing their education were getting higher rights in Raj Sabha. Yes, Raj Sabha में अगर ऐसा कहा जाए कि you are a student of Vallabhi University, then that you would easily get a job over there. That was the pride of this university. Knowledge, worship and particular system of education made the university famous not only in India but also in the world at that time. Students from India and abroad used to come for education in this university. Yes, many foreign students used to come over here for their studies. It was an international university in the real sense. Almost all the branches of knowledge were taught here. Maintenance of the university was done through the charity given by the kings and landlords. ऐसा हिस्ट्री भी बताती है कि मैत्रेय डायनेस्टी ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे दिए थे और देते भी थे, बिकॉज दे always give importance to education. It was world renowned university of Indian education for the knowledge of art and science. Okay, so this chapter is finished over here. 4 university Nalanda, Takshashila, Varanasi and Vallabhi. See, this is very important because हर बार एग्जाम में from this chapter you get a 4 marks पे big question आता है and most probably and that also it is with the option question. So एक आधी यूनिवर्सिटी पूछते ही है, it is not that hard, so learn it properly because you will get a short note from any of these 4 university by sure. Okay, so next comes
See, these are the MCQs. So, Dash is the most ancient book of Indian literature. Wait a minute, let me take over here. Yes. So, which is the most ancient book of Indian literature? It is Rig Veda. Okay. Which language in Buddhist literature written? Buddhist literature कौन सा language में लिखा गया है? Yes, it is Pali. Okay, Pali is the oldest language of Buddhist religion. Which is the oldest language of Dravidian? You all know that it is Tamil. Okay, Tamil लोग are very proud for their language. Which is the first literary composition of poet Chandrabai in the in the Hindu literature? It is Prithviraj Raso. And which is the literary composition of Maharishi Panini? वो क्या है? अष्टध्यायी. Okay, so सब में आंसर ए ही आता है. All answers are option A ही right answer है. So I'm finishing this chapter over here. Learn the universities very properly. Thank you. Oh my God, yes. Did it get cancelled? So we are stopping it over here.